So after solving many sums which were based upon the transpose of a matrix, You are currently the only person in this conference. today we are going to start with a new concept which is being called to be as inverse of a matrix. Inverse of a matrix. प्रियंका मुझे फिर से लास्ट टाइम मैंने कहा था बड़ा मुझे लास्ट बड़ा 5-7 मिनट्स कुछ बाकी हो गए तब मुझे एक बार याद कराना प्रियंका. विदाउट फेल मुझे याद कराना. चलो inverse of a मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सब लोग बराबर ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दो. We are going to start with the new term, with the new concept, which is called to be as the inverse of a matrix. Inverse of a matrix. भाई हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि what is the meaning of the term inverse of a matrix is. Inverse of a matrix का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये देखो if A and B, if A and B are the two square matrices, I repeat, if A and B are the two square matrices, which are of the same order, which are of the same order, then if A into B, if A into B, if it becomes equal to I, if A into B, if it becomes equal to I, where what I stands for? I जो है I जो है what it stands for? It stands for the identity matrix. What I stands for? The identity matrix. A into B, if it becomes equal to I, A into B, if it becomes equal to I, so here in this case, this B is called to be as the inverse of A. B, बोल. B is called to be as the inverse of A. B is called to be as the inverse of A, and A is called to be as the inverse of B. But यहाँ पे what is the criteria is कि जो inverse है inverse, ये inverse वाला जो टर्म है ये exist कब होगा तुम्हें पता चला? Only when A into B, when it will become equal to I, where what is I is the unit matrix, or it is called to be as the identity matrix. समझ में आया तुम लोग को?
तो हियर b जो है बेटा b, व्हाट यू विल कॉल b टू बी एज द b is called to be as b is called to be as inverse of a बेटा b is called to be as inverse of a बराबर है एंड इनवर्स ऑफ ए बोला बेटा तो इसका मतलब है दिस बी it will be equal to a इनवर्स बेटा। अब ये जो टर्म है बेटा वो टर्म a रेज टू माइनस वन नहीं है, आई रिपीट कि वो जो गिवन टर्म है बेटा वो गिवन टर्म बेटा a रेज टू माइनस वन नहीं है बेटा, it is representing a inverse. What it is representing? A inverse. B is called to be as a inverse. बराबर है। कोई भी स्टूडेंट बेटा उसे a रेज टू माइनस वन रीड नहीं करेगा बेटा क्या रीड करेगा उसे a inverse बेटा, क्या रीड करेगा उसे a inverse. B is called to be as a inverse. At the same time बेटा what a is called to be as a A is called to be as A is called to be as A is called to be as inverse of B. A is called to be as the inverse of B. And when we say that A is called to be as the inverse of B, that means A it will be equal to B inverse. क्या कोई भी स्टूडेंट उसे B रेज टू माइनस वन रीड करेगा? कोई भी स्टूडेंट बेटा क्या उसे B रेज टू बेटा माइनस वन रीड करेगा? नो, व्हाट इट विल बी रीड टू बी एज अच्छा अब सपोज बेटा यही वैल्यू बराबर अगर मैं ऊपर वाले उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं बराबर तो यहां पे देख बेटा भाई मुझे यहाँ पे देख बड़ा फॉर्मूला मिल सकता है कि नहीं और व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई कैन ऑब्टेन ये देख व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई कैन ऑब्टेन इज 4 a into a inverse which is equal to I और ये कैसे मिला पता चला तुम लोग को? ये जो बी का जो वैल्यू था बड़ा बी का वैल्यू पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स
डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ये मैंने बड़ा सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द अबव फॉर्मूला, एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द value in the above formula, I got the answer as A into A inverse. A into A inverse is equal to I. A into A inverse is equal to I. और यहां पे इसी बात के ऊपर बड़ा ये देख, तो मैं लिखना है बड़ा नोट, note, and in that note बड़ा you specify कि the inverse of a matrix, inverse of a matrix, it exists, inverse of a matrix, it exists if and only if and only if the given matrix is a, if and only if the given matrix is a non-singular matrix, if and only if the given matrix is a non-singular matrix. अच्छा, when I am using the word non-singular matrix, तो भाई पता होना चाहिए ना अपने को कि what is the meaning of the term non-singular matrix. चलो कौन मुझे बताएगा what is the meaning of the word non-singular matrix? What is the meaning of the word non-singular matrix? A matrix whose determinant is not equal to 0. A matrix whose determinant is not equal to 0. Such type of matrix it is being called to be as नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नोट कर लिया बड़े सब लोग ने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका मतलब बड़ा यहाँ पे हर टाइम बड़ा तुम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि whenever बड़ा you will be finding the inverse of a matrix, तो every time बड़ा you will have to prove, every time बड़ा you will have to check कि whether the given matrix is a non-singular or not. अगर गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ही तुम लोग बड़ा उसका इनवर्स फाइंड कर पाओगे, तो ही तुम लोग बड़ा उसका इनवर्स फाइंड कर. अगर गिवन मैट्रिक्स बड़ा सिंगुलर अगर हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स सॉरी उस डिटरमिनेंट वैल्यू बड़ा is equal to 0, तो क्या उसके लिए बड़ा इनवर्स एग्जिस्ट कभी होगा? क्या उसके लिए बड़ा कभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा? नहीं होगा. चलो लीव वन लाइन एंड राइट डाउन.
methods for finding inverse of a matrix. Methods for finding Eric. Inverse of a matrix. Ready? तो भाई सब लोग बराबर ध्यान से सुनो. If we want to find the inverse of a matrix, ध्यान से सुनो. If we want to find the inverse of a matrix, the inverse of a matrix, it can be obtained by using the two methods. It can be obtained by using the two methods, and that two methods are, number one is the method of adjoint. Number one, which is called to be as the method of adjoint. Adjoint method bola, adjoint. And number two is by using the elementary transformation method. Number two is by using the elementary transformation method. Elementary transform method. So when I am using the word transformation, the meaning of the word transformation means it is a change. So बताओ मुझे फटाफट, what is the meaning of the word transformation? Means it is a change, बराबर है. And here in this case, when we are going to talk about the elementary transformation method, तो भाई यहाँ पे तुम लोग हमेशा याद रखना कि ना elementary transformation method, बच्चा लोग, we are going to study about the two methods, and the two methods which we are going to study, they are number one, which has been called to be as row transformation method. Number one, which is called to be as a row transformation method. Another one, which is called to be as a column transformation method. Number one is the row transformation method, and number two is the column transformation method. बराबर है? Right on. Next one. Inverse of a matrix. Inverse of a matrix. It can be obtained. Inverse of a matrix. It can be obtained by using the two methods. It can be obtained by using the two methods. And they are number one is a by using the method of by using the
Method of adjoint. By using the method of adjoint. Number 2 is a by using the elementary transformation method. Elementary transformation method. Transformation method. Elementary and in that elementary transformation method, there are two methods. Number 1, by using row transformation. And number 2, by using